हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेंटिस्टिक हब। आज का हमारा टॉपिक है द परमानेंट मैक्सिलरी कैनाइन। लेट्स start with its introduction. So there are 4 canines in our oral cavity. These are called the cornerstones. Why they are called cornerstones? Because these four canines placed at the corner of our mouth. Here you can see these are placed mainly at the corners of the mouth. That's why they are called the cornerstone. They are the longest teeth in our oral cavity, as well as they are single rooted, and the roots are longer. They are single rooted and the root is longer than any other teeth. सिंगल रूटेड एंड साथ ही साथ क्या है, जो रूट है वो भी सबसे लॉन्गर है. देन व्हाट इज द कैनाइन गाइडेंस? नाउ द कैनाइन गाइडेंस क्या है? द शेप एंड द पोजीशन ऑफ द कैनाइन्स कंट्रीब्यूट टू द गाइडेंस ऑफ द टीथ इनटू द इंटरकस्पल पोजीशन. जब कैनाइन्स जो है हमें हेल्प करते हैं कि हम अदर टीथ के इंटरकस्पल पोजीशंस को चेक करें और उनका जो ऑक्लूजन है वो अच्छे से सेट कर सकें. इसीलिए कैनाइन गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है. हम कैनाइन से ही पता कर सकते हैं कि एंटीरियर टीथ की सेटिंग कैसे है और पोस्टीरियर टीथ की सेटिंग कैसे करनी है. ओके, नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? दे हैव अ सेल्फ क्लेंजिंग प्रॉपर्टी, एफिशिएंट एनकरेज इन जॉ, and they are valuable teeth as when we considered as a unit of natural dental arches or a possible assistant in stabilizing replacement of lost teeth and the prosthetics procedures. Now what about the canine? कैनाइन किससे रिजेंबल करता है? तो कैनाइन रिजेंबल्स टू कार्निवोर्स. why they resembles carnivores? Because the shape of the crown, that they have a pointed cusp, and their location in the mouth, the extra encouraged feature or extra encouraged furnished by the long and strongly developed roots, these features resembles the canine to the carnivores. What? Its cusp, or the shape of the crown, its root, its anchorage, or a protection of teeth. Now what about the canine evidence? The bony ridge over the labial portion, over the labial portion, here you can see. So that is called the canine evidence. Here in this picture, in the labial portion, there is a present a bony ridge. That bony ridge is the canine eminence. Now talk about the teeth, its mesial side or its distal side. In the mesial side, you can see that mesial side is in contact with the lateral incisor. So, and it resembles to the लेटरल इंसाइजर. जो कैनाइन का मीजियल हाफ होता है वो लेटरल साइड की तरफ रहता है, और जो इसकी साइड होती है वो लेटरल इंसाइजर से थोड़ा सा मिलती जुलती है. और जो डिस्टल साइड है वो किसको कांटेक्ट करता है? प्रीमोलर्स को करता है. और इट इज या डिस्टल हाफ रिजेंबल्स टू द प्रीमोलर. ओके, नाउ let's talk about the chronology. First evidence of calcification is around 4 to 5 months. Enamel is completed at around 6 to 7 years, and eruption is around 11 to 12 years, and root is mainly completed at 13 to 15 years. Now what about the dimensions? Dimensions हमारी किस में होती हैं? सारी millimeters में होती हैं, यानी कि mm में होती हैं. So let's talk about the dimensions. First of all, we see the cervico-incisor length of the crown, which is mainly 10.0 mm. The length of crown is 17 mm, and the mesiodistal diameter of the crown is 7.5 mm, and mesiodistal diameter of crown at the cervix part is 5.5 mm. Now the buccolingual diameter, here D stands for diameter. So
The buccolingual diameter of crown is 8 mm, and buccolingual diameter of crown at cervix is 7.0 mm, and curvature of the cervical line at the mesial side, that is a 2.5 mm, and at the distal side, that is a 1.5 mm. Now let's talk about the various aspects of the canines. First we will talk about the labial aspect. So in labial aspect, the maxillary canine is narrower mesiodistally. अगर हम mesiodistally देखेंगे तो जो maxillary canine है वो क्या है, narrower है than the सेंट्रल इंसाइजर. अगर हम सेंट्रल इंसाइजर से देखेंगे, एंड इट हैज़ अ 2 स्लोप्स. देखिए ये मीजियल साइड है, ये डिस्टल साइड है. जो मीजियल स्लोप होता है वो क्या होता है, छोटा होता है. द मीजियल स्लोप इज बीइंग शॉर्टर देन द डिस्टल स्लोप, एंड द लेबियल सरफेस इज स्मूथ एंड बल्की बिकॉज इन द मिडल देयर इज अ लेबियल रिज इज प्रेजेंट. नाउ व्हाट अबाउट द लिंगुअल एस्पेक्ट. सो लिंगुअल एस्पेक्ट का जो क्राउन का शेप है वो क्या होता है, ट्रेपेजॉइडल इन शेप. हियर मैं ऐसे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, आपको बताती हूँ. ये शेप आता है, दैट इज अ ट्रेपेजॉइडल इन शेप. सो क्राउन एंड रूट नैरोअर लिंगुअली देन लेबियली. जो क्राउन और रूट्स हैं वो क्या होते हैं, नैरो होते हैं लिंगुअली. अगर हम लेबियली और लिंगुअली देखेंगे तो लिंगुअली वो ज़्यादा नैरोअर होते हैं. सीजी सो अ मोर कर्वेचर. हियर यू कैन सी देयर इज अ मोर कर्वेचर, मे बी अ स्ट्रेट और फॉर अ शॉर्ट इंटरवल. Cingulum इसका क्या है, यहाँ here you can see this is a cingulum. Cingulum is a large and sometimes it may behaves like a pointed cusp. Okay, and the strongly developed marginal is these are the marginal ridges which are strongly developed, and they have a well developed lingual ridge, and at the center 2 shallow cavities. These are 2 cavities at the center which is present, and these are mainly mesial. जो mesial side पे cavity होगी that is the mesial lingual fossa, और जो distal side पे होगी that is the distal lingual fossa. ठीक है. रूट्स नैरोअर देन लेबियल. मीजियल एंड डिस्टल सरफेस ऑफ रूट इज विजिबल लिंगुअली. अगर हम लिंगुअली देखेंगे तो जो मीजियल साइड और डिस्टल साइड की जो रूट्स हैं हमें आराम से विजिबल हो जाएंगे. एंड डेवलपमेंटल डिप्रेशंस ऑन द मीजियल साइड एंड द डिस्टल साइड इज प्रेजेंट. डेवलपमेंटल डिप्रेशंस आर सीन. Now here you can see these are the marginal ridges. Okay, and these are the grooves. These are the grooves, marginal grooves. तो जो ये एक मार्जिन डिस्टल ग्रूव है, सॉरी मीजियल लिंगुअल फोसा है और दूसरा डिस्टल लिंगुअल फोसा है. ये 2 कॉन्केविटीज प्रेजेंट है, और बाकी जो साइड में है डेट इज अ मार्जिनल रिज. जो मीजियल साइड में होगी उसको हम बोलेंगे मीजियल मार्जिनल रिज, और जो डिस्टल साइड में होगी उसे हम बोलेंगे डिस्टल मार्जिनल रिज. नाउ talk about the mesial aspect. In the mesial aspect, crown is mainly triangular in shape. So क्राउन यहाँ पे जो मीजियल एस्पेक्ट से अगर हम देखते हैं तो ये क्या करता है, दिखाता है ग्रेटर लेबियोलिंगुअल मेजरमेंट होती है देन एनी ऑफ द एंटीरियर टीथ. जो इसकी लेबियोलिंगुअल मेजरमेंट होती है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है देन एनी ऑफ द एंटीरियर टीथ. लेबियल आउटलाइन मेनली क्या एग्जिबिट करती है, दैट इज द कॉन्वेक्सिटी. रूट आउटलाइन क्या है, कोनिकल है, टेपर्ड और ब्लंट पॉइंटेड एपेक्स, एंड मे कर्व लेबियली. दैट इज लेबियल साइड में मे भी थोड़ा सा हो सकता है ये क्या हो, कर्व हो. A line bisecting is labial to a line bisecting to the root. Here you can see this bisecting line. This bisecting line that is bisecting the cusp is a labial. cusp थोड़ा सा क्या है, इधर labial side में है. This is a labial side, तो cusp थोड़ा सा labial side की तरफ ज़्यादा है. ठीक है, to the bisecting the roots. Now in the distal aspect is same as the mesial aspect. Here is the less जो CEJ का curvature है वो less होता है. That is the 1.5 mm, not 1 mm, because in wheelers हमारी जो प्रोफेशनल बुक्स हैं उनमें क्या है 1.5 mm डायमेंशन दे रखा है. कॉन्टैक्ट एरिया इसका क्या है, ब्रॉडर है. डिस्टल मार्जिनल रिज इज हैवियर, मोर इरेगुलर इन आउटलाइन, मोर कॉनकेव सर्फेसेस. यहाँ पे देखिए कॉनकेव सर्फेसेस बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, एंड मोर प्रोनाउंस्ड रूट डिप्रेशन. जो रूट का डिप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है. दिस अगर हम मीजियल की साइड की रूट और डिस्टल साइड की रूट देखेंगे तो जो डिस्टल साइड में रूट होगी वहाँ पे जो ये डिप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड मिलेगा हमें. ये जो डिप्रेशन है वो हमें बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड मिलेगा. Now talk about the incisal aspect. In the incisal aspect, the labiolingual dimension, that is this,
this is the mesiodistal dimension and this is the labiolingual dimension. So labiolingual dimension क्या होती है? That is the greater than the mesiodistal diameter. Okay, and maxillary canine is generally convex in both its labial and lingual outlines. कॉन्वेक्स ही रहेगी दोनों साइड से, आप देख लीजिए. और जो कस्प टिप है इसकी क्या है? वो लिबियल है. अभी मैंने आपको दिखाया इससे पहले यहाँ पे, that the cusp tip is more towards the labial side. Here you can see. So the cusp tip is labial to the center of the crown, labiolingually, and mesial to the center, mesiodistally. The labial ridge and the cingulum, जो labial ridge यहाँ पे देख सकते हैं आप, labial ridges, these are the cingulum, these are the marginal ridges, labial and lingual ridges, these are more pronounced, more visible, or you can see is easily noticeable from this aspect. Now how can we differentiate between the left and right canine? So first of all we see in root डिस्टल डिप्रेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, डिस्टल साइड पे रूट में डिप्रेशन हमें ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है इन कंपैरिजन टू द मीजियल साइड. एंड जो मीजियल स्लोप है वो इज शॉर्टर देन द डिस्टल स्लोप. हियर मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ. जो मीजियल साइड का स्लोप है यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, तो जो ये मीजियल साइड है और ये डिस्टल साइड है, तो जो मीजियल साइड का स्लोप है वो क्या है? शॉर्टर है देन द डिस्टल साइड. तो यहाँ से भी हम एक डिफरेंशिएट कर सकते हैं. दूसरा हमने क्या बोला? डिप्रेशन. ये देखिए डिस्टल साइड में डिप्रेशन हमें रूट में ज़्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू द मीजियल साइड. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज द कॉन्टैक्ट पॉइंट. तो मीजियल साइड किसको रिजेंबल कर रहा है? लेटरल इंसाइजर. और डिस्टल साइड को किसको रिजेंबल करता है? प्रीमोलर्स को. सो यहाँ से भी हम पहचान लेंगे कि हमारा ये क्राउन लेफ्ट साइड, कैनाइन लेफ्ट साइड का है या राइट साइड का है. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा. थैंक यू सो मच.